So do it like this. जल्दी से करो, जल्दी से. Quickly, everybody, do it like this. Give rest to your neck. जल्दी से अपनी नेक को पीछे करो, अपने हाथों से प्रेशर आगे करो. Do it like this. एवरीबडी सीधी सीधी. चलिए ऐसे भी करिए, ऐसे भी करिए, ऐसे भी. डू इट. अपने बेटा टेबल पे नहीं, टेबल पे नहीं करो. शर्म मत करो, शर्म मत करो. डू इट लाइक दिस. टेबल पे हाथ नहीं, टेबल पे कूनिया नहीं. चलो एक बार ऊपर भी स्ट्रेच करो, एक बार ऊपर भी स्ट्रेच करो. एवरीबडी 9th C को शर्म आ रही है, जरा जल्दी से. डू इट लाइक दिस. सीधे 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 स्ट्रेच इट. ऊपर अपने कानों के पास अपने हाथ. सीधी कमर सीधी. हैंड स्ट्रेट. ऊपर ऊपर. ऐसे नहीं करने, ऐसे नहीं, सीधा सीधा. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड स्टॉप. सो दिस मूवमेंट, ये किस कारण है? दिस मूवमेंट ऑफ बोन्स is due to muscles. Remember that bones themselves cannot move. They can move with the help of muscles only. Bones form the structure. Bones help in movement, but with the help of muscles. So, we were doing about bones and cartilages. Bones and cartilages. So bones, you know, hardest, ध्यान से, hardest tissue, substance की बात नहीं कर रही हूं. Hardest tissue in our body. Living है bones, and this is soft and flexible. Why there is difference? ये hard क्यों है? ये soft क्यों है? Can anybody tell? Why this is hard? Why this is soft? Anybody? बेटा क्योंकि बोन में क्या है? देखो इधर, एवरीबडी हियर. नहीं तो क्रैमिंग ही करोगे. समझोगे तो क्रैमिंग की जरूरत नहीं. बस एक बार दिमाग में बैठ गया, इट्स ओके. व्हाई बोन इज हार्ड? पहली चीज, फर्स्ट थिंग यू शुड नो दैट बोन इज फॉर्म्ड ऑफ बोन सेल्स एंड मैट्रिक्स. राइट? जैसे हम कहते हैं सीमेंट में छोटे छोटे पत्थर है. राइट? लाइकवाइज देयर इज अ सीमेंटिंग मटेरियल called as matrix, and in between the matrix there are present bone cells. Right? Likewise in cartilage also there is matrix and there are chondrocytes, cartilage forming cells. Right? तो difference कहाँ पे है? Difference है matrix में. Everybody settle down quickly. Settle down and concentrate on the screen. छोड़ दो बाकी सब. Matrix में फर्क है. In bones, the matrix is formed of inorganic substances mainly. Calcium and phosphorus salts. Calcium phosphate, magnesium phosphate, calcium nitrate. इस तरह से बहुत सारे inorganic salts हैं, जैसे सीमेंट होता है. But in cartilage, the matrix, it is not form of calcium or phosphorus, but it is formed of flexible proteins, flexible carbohydrates. तो डिफरेंस जो हार्डनेस या फ्लेक्सिबिलिटी है वो किस कारण है? दैट इज ड्यू टू मैट्रिक्स. रीजन असर्शन का क्वेश्चन इसमें आएगा ही आएगा, इसलिए स्टार डाल के पॉइंट लिखना. मैट्रिक्स ऑफ बोन इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेनली. ये नहीं कि और मिनरल्स नहीं है, मेनली इसका है, which provides hardness. ठीक है?
और दूसरी जगह यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, ये आपने पूरा लिखना है। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स which provide flexibility. Which provide flexibility. जो bones है, the matrix is formed of calcium and phosphorus salts, whereas cartilages, the matrix is formed of carbohydrates and proteins. Then next is bone forming cells are osteocytes and cartilage forming cells are chondrocytes. Cartilage forming cells are chondrocytes. ठीक है जी, करें आगे। Another very important point, bones have blood vessels. Therefore, if bones break, fracture हो जाता है, then bones regenerate. Whereas cartilage, non-vascularized, इसके पास खुद की ब्लड वेसल्स नहीं है, अड़ोस पड़ोस से थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन इसको मिलता है। Therefore, once damaged, takes long time to regenerate. एक बार डैमेज हो गया अगर कार्टिलेज, it takes long time to regenerate. Right? लिखो फटाफट से। Write down quickly. Ninth A, switch on your camera and seeing ninth A after a long time. Class ninth A में बहुत time बाद, although you may be sitting in another class. ठीक है, चलिए ये हम बोन्स एंड कार्टिलेजेस के बारे में बता रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हम कर चुके हैं, वो थोड़ी रिकॉर्डिंग में देखना। सो अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको, चलिए एक और पॉइंट पहले बताएं फिर स्ट्रक्चर बताते हैं। बोन्स फॉर्म skeletal framework, whereas cartilages, I had told you yesterday also, cartilages कहाँ पे present है, that is
pinna of ear, tip of nose, tracheal rings, intervertebral discs, then covers the ends of long bones. Let us say, for example, this is a bone, then this is cartilage. It covers the ends of the long bones. This is cartilage. ठीक है जी. सो बहुत बार ये 9th में कई पेपर्स में मैंने देखा क्वेश्चन आ जाता है कि एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स आर कवर्ड बाय एमसीक्यू में. सो कार्टिलेज. नेक्स्ट हम आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ बोन. स्ट्रक्चर ऑफ बोन, इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम बोन का देखें, अगर हमने जैसे हम प्लांट्स की बात करते हैं ऐसे अगर हमने बोन को इस तरह से स्लाइस काट के देखा तो हमने क्या देखा. आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है. ये सिर्फ हम इस वॉल की बात कर रहे हैं. ये हमें नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन जो है ये हमें ये सारा नजर आ रहा है क्योंकि अंदर जो कैविटी है दिस इज बोन मैरो. खाली जगह है जहां पे एक फैटी टिश्यू पड़ा है, दैट इज बोन मैरो. हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ये जो राइट. सो दिस इज, यू कैन सी दिस. अंदर क्या है ये सारा है मैट्रिक्स. This is matrix. Then in the matrix, इस तरह से bone cells है. These are bone cells. ये osteocytes है. This is matrix. This is osteocytes. This is bone marrow. और ये wall of the bone. ये वाली ये wall of the bone. राइट. बहुत डिटेलिंग में मैंने नहीं, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर बताया है. अभी मैंने ब्लड वेसल्स नहीं दिखाई, कुछ नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर. Then what about cartilage? Cartilage is a solid, no marrow. इसका हमने स्ट्रक्चर किया तो ये ऐसे ही नजर आया. वॉल ऑफ द cartilage और दिस इज मैट्रिक्स. बट यहाँ पे what is the difference? That cells are present in group of 2 to 4. बना लोगे तो याद रहेगा. इस तरह से ये है कॉन्ड्रोसाइट्स. दिस इज मैट्रिक्स.
और ये है chondrocytes. The diagram is given in your book. That's why I have drawn this, so that you can understand. ठीक है जी, बना लो बेटा, एवरीबडी ड्रॉ इट. आपकी बुक में वैसे डायग्राम में हेवर्शियन कैनाल दिया हुआ है, तो वो भी मैं थोड़ा सा बता देती. बोन में हेवर्शियन कैनाल हैविंग ब्लड वेसल्स. ये सब ऑस्टियोसाइट्स. हेवर्शियन कैनाल, ऑस्टियोसाइट्स हेवर्शियन कैनाल के आसपास है, बट नो सच ब्लड वेसल्स इन कार्टिलेज. बनाओ जल्दी से. So this is skeletal connective tissue. The bones are joined with each other. Bone with bone. It is called as, याद रखना है, BBL. Ligament. Bone with bone is joined by ligament. Fibrous connective tissue. Ligament क्या है? Fibrous connective tissue. Write down. Bones are joined with bones with a fibrous connective tissue called as ligament. कल मैं आपको इसकी इमेजेस भी दिखाऊंगी. Bones are joined with bones by fibrous connective tissue called as ligament, and bone is joined with muscle. Bone is joined with muscle because muscles helps in movement. Bones are joined with muscles with a fibrous connective tissue called as tendons. BBL, BMT से याद रखना है. Bones, muscles, tendons. Bones are joined with muscles with fibrous connective tissue called as tendons. ठीक है. Give differences between, क्वेश्चन आ जाएगा. Give difference between tendons and ligaments. So what is the difference? Both are fibrous connective tissue, but ligament join bone with the bone, whereas tendons join bone with the muscles. Okay? चलिए, अब हम ये देखते हैं कि अपने एवरीबडी सी योर आर्म. सबसे बाहर है स्किन. स्किन के अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स. तो चलो जो है सो है. स्किन के अंदर जो है दैट आर मसल्स, राइट. और उन दोनों के बीच में क्या है? दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. हर ऑर्गन, लेट अस से स्टमक है. स्टमक जो है वो बाहर से इंटेस्टाइन या बाहर से किडनीज या किसी और ऑर्गन के साथ, मतलब उनके बीच में जो स्पेस है वो खाली नहीं है. स्टमक के बाहर, किडनी से बाहर, दोनों के बीच में स्पेस खाली नहीं है. दैट इज फिल्ड बाय एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है.
It forms the cementing substance between different organs. It connects, the areolar tissue connects skin with the underlying muscles. दोनों को connect करने के काम आ रहा है. ठीक है. So next is, ये हमने किया था skeletal connective tissue. Next is connective tissue proper. फंक्शंस मैंने आपको कल बताए थे. इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स, दैट इज areolar connective tissue, then there is adipose tissue, and then there is fibrous connective tissue. Areolar connective tissue, again क्या है इसमें? This is matrix, jelly like matrix. बनाओ डायग्राम साथ साथ, डॉट्स बनाओ. This is matrix. Matrix has various cells. कौन से cells है देखिए जरा. ये क्या सेल है? दिस इज फाइब्रोसाइट. फाइबर्स बन रहे हैं. कौन से फाइबर्स? दैट इज, यहां देखिए, यहां से फाइबर्स बन के निकल रहे हैं. इसमें से निकल रहे हैं. फाइब्रोसाइट्स आर फॉर्मिंग फाइबर्स, राइट? प्रोटीन्स के बने होते हैं, right? These are formed of proteins. So fibrocytes, fiber forming cells, these are bundles of white fibers. और क्या प्रेजेंट है? Then there are, ये अगर हम देखेंगे, branched, ये जो फाइबर्स है, these are yellow fibers. व्हाइट फाइबर्स है. मैंने थोड़ा सा कलर उल्टा कर दिया है, आप देख लेना जरा. These are येलो कलर के व्हाइट फाइबर्स बना दिए और व्हाइट कलर के येलो फाइबर्स बना दिए. ठीक है. देन देयर आर ऑल्सो प्रेजेंट, कल एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा था, मास्ट सेल्स. These are mast cells. इसके नीचे लिखो, they release mast cells के नीचे लिख लो, they release histamine, एक केमिकल है, ड्यूरिंग, या अलग से लिख लो, एलर्जिक रिएक्शंस. And histamine dilates. Dilates का मतलब होता है खुला करना, blood vessels. That's why अगर कहीं की एलर्जी हो जाए, वहां पे रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती. Then there are present fat cells. These are fat cells. फैट सेल्स के ये जो बीच में है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस नहीं है. न्यूक्लियस तो ये है. दिस इज फैट ग्लोब्यूल.
जिसमें फैट स्टोर है, बहुत सारे फैट सेल्स है. Then there are immunity providing cells, lymphocytes. These are lymphocytes. आपको पता है, these are white blood cells, lymphocytes. ये देखो, मैं अलग से मैट्रिक्स बड़ा बना लेना. इरेगुलर इस तरह के सेल्स है. मैक्रोफेजेस. Macrophages ingest and digest, microbes. Macrophages ingest and digest microbes. और भी कई तरह के सेल्स है, बट मेनली यही है. मैक्रोफेजेस के फंक्शन लिखिए. मास्ट सेल्स, मास्ट सेल सिक्रीट हिस्टामिन. देखो लिखा है, नहीं तो दोबारा से लिखो. मास्ट सेल सिक्रीट, although not given in the text, but everything is given in the diagram. That's why I'm giving you the functions. Fibrocytes form fibers. First है fibrocytes, fiber forming cells. Functions आ सकते हैं 5 marks में. Simple एक एक. Give the function of the following cells in the areolar tissue. Fibrocytes form fibers. Mast cells secrete histamine. लिख लो, स्टार डाल के लिखना. Mast cells secrete histamine during allergic reactions. Fat globules. Fat globules. Store, not fat globules, I'm sorry, fat cells. Fat cells secrete या store fats. Fat cells store fats in fat globules. Fat cells store fats in fat globules. Lymphocytes. Lymphocytes are WBCs which provide immunity. Lymphocytes are WBCs which provide immunity. Macrophages. Macrophages digest foreign material. तो आप क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन क्या आ सकता है? राइट डाउन द क्वेश्चन. Give the location of areolar connective tissue. लिखिए क्वेश्चन. Give the location of areolar connective tissue. Label lymphocytes, macrophages, fibrocytes, mast cells, fat cells, in the given diagram. And give functions of each type of cell.
give function of each type of cell. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डन, एवरीबॉडी डन? और ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख के रखो, ठीक है? एवरीथिंग यू हैव डन। नेक्स्ट इज, क्वेश्चन लिख लिया सबने? नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू अगेन कनेक्टिव टिश्यू है, मैट्रिक्स, matrix has fibrocytes, then few fibers, and lot of fat cells. Lot of fat cells. Fat cells, also called as adipocytes. Fat cells or adipocytes. Right? So क्या है adipose tissue में? Lot of adipocytes. Then, you know, fibrocytes, fibers. Mainly ये है and matrix तो है ही. Because it has lot of fat cells. So adipose tissue function क्या है? Store fats. Function is store fats. And where it is present? It is present below skin in the thighs. It is present below skin in the thighs. It surrounds various organs. It surrounds various organs such as heart. Heart के बाहर भी बहुत सारा फैट है. Such as heart, kidneys, eyeball, etc. एक तो स्टोर फैट्स है, दूसरा फंक्शन क्या है? बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिलो स्किन. सिर्फ थाइज में नहीं, और जगह भी थाइज में थिक है, इसे थाइज वाला पोर्शन काट दो, सिर्फ ये लिखिए इट इज प्रेजेंट बिलो स्किन. थाइज में बहुत थिक है, इसलिए मैंने स्पेशली लिखवा दिया. अदरवाइज इट इज प्रेजेंट बिलो स्किन एंड इट स्टोर फैट्स. ये तो ठीक है. सेकेंड इज इट इज इंसुलेटर ऑफ हीट. It is insulator of heat. It does not allow our body heat to go out. That is why
as adipose tissue act as insulator, therefore it is thick in animals living in cold, such as polar bear. Right? ठीक है जी। सो उसके बाद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, व्हाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि देयर इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो, ज्यादा हम डिटेल नहीं। ठीक है, टाइम आप मुझे बता देना जब आपका हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू और मसल, इट इज वन एंड द सेम थिंग। एक मसल जो है वो एक टिश्यू ही है। हम कहते हैं बाइसेप मसल है, व्हाट इज इट? इट इज अ टिश्यू, राइट। मसल formed of many, हम कहते हैं टिश्यू is formed of many cells, so likewise muscle is formed of many muscle fibers. Many muscle fibers. Muscle fibers is a muscle cell. It is a muscle cell. तो हमारे पास property of muscle fibers has the property of contraction and relaxation. Thus helps in movement. बट इसको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने की इंफॉर्मेशन कौन देता है? ब्रेन देता है। अगर ब्रेन का पार्ट कोई खराब हो जाए, पैरालिसिस हो गया, तो वहां के मसल्स को मैसेज नहीं मिला। राइट आर्म का पैरालिसिस हो गया, यहाँ की मसल्स को ब्रेन से मैसेज नहीं मिला, द मसल कैन नॉट वर्क, सो दे विल वर्क ओनली when they get message from the brain. Now, there is one question. Let's see who can answer me. Both muscles and bones help in movement. कहीं पे बोन्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में बोन्स नहीं है, बट वो स्टमक इधर उधर को मूव करता है, फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट? सो मसल्स कैन मूव अलोन। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में कोई बोन्स नहीं है, सिर्फ मसल्स है,
इट कैन मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स। बट अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ बोन्स हो, मसल्स ना हो, तो वो ऑर्गेनिज्म मूव कर ही नहीं सकता, वो एक पार्ट भी नहीं हिला सकता। वाई? यस, हु विल टेल मी? हाँ जी बेटा बोलो। बिकॉज मसल्स हैव द प्रॉपर्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा एक और पॉइंट बताइए। बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। तो हम ये कह सकते हैं, दिस इज बिकॉज ओनली मसल्स दे हैव द प्रॉपर्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड दे आर कनेक्टेड विद द नर्वस टिश्यू विच गिव द स्टिमुलस। देखो जरा, आंसर लिखिए इसका। दिस इज बिकॉज। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा। टाइम इज ओवर। अच्छा, बस हम ये काम कर लें, ये लिख लें, फिर हम करते हैं। बिकॉज only muscles have the property, because only muscles have the property of contraction and relaxation. Further, full stop करके, further muscles are connected with nerve fibers. Although bones भी होती है nerve fibers से, ऐसा तो नहीं, but muscles are connected with nerve fibers through which they get stimulus for contraction. Through which they get stimulus for contraction. ठीक है जी। Bones are rigid, cannot contract or relax. Therefore, bones cannot move without muscles. ठीक है, अब आपने बेटा एक काम, अगर आपका होमवर्क, अगर आपको टाइम मिले तो 3 टाइप के फाइबर्स का डायग्राम दिया हुआ है, मसल फाइबर्स का, स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। इनका डायग्राम बना कर आओ, ठीक है, जल्दी से। टुमारो वी विल कंप्लीट, बट कल हम क्वेश्चंस ढेर सारे करेंगे इसके बारे में, रीजन असर्शन के, तो एक बार पढ़ कर आना। ठीक, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।